हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी फ्लक्स चैनल पे। हमारी ये चैनल आपके लिए हमेशा हेल्प करते हुए, आपको हमेशा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हुए, कुछ ना कुछ पढ़ाते हुए, आज हम लोग इसी सिलसिले में बीआरसी में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें जो कुछ वैकेंसीज निकले हुए हैं इनके बारे में बात करेंगे। So I'm here to discuss about students how to enter into Department of Atomic Energy, DAE. Engineers, it's always your dream to go into atomic research, space research and such areas. And obviously I feel students, Department of Atomic Energy is one of the premier government organizations for entire atomic program, India's atomic energy, and me of course being associated with it in some or other way with my schooling in Atomic Energy Central School. I feel that it's my responsibility to discuss a few points and also give you a little information about how to enter into DAE. There are two types of vacancies. There are two types of entry level requirements for science postgraduates and engineering graduates. They're called as OCES and DGFS. The OCES is students orientation course of 1 year, and DGFS is a 2-year program. Of course, this is more for the MTech. This is for a direct job. It's almost like going with the BTech and going for the job. This is like going to your job after completion of your MTech. So BTech और MTech level entries मान लीजिए ये दोनों BTech level और MTech level entries हैं. So what is OCES? Have a look at it, students. When you talk of OCES, it's an orientation course for engineers and science students. Science के लिए चाहिए आपको PG, पक्का MSc. Engineers के लिए ग्रेजुएशन काफी है और ये 1 साल का है. It's almost like a training program in different schools of DAE. एंड उसके बाद आपकी अब्जॉर्प्शन और प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है. इट मे बी इन योर पावर प्लांट, पावर प्रोजेक्ट, कोटा और कल्पकम, और इट मे बी इन योर न्यूक्लियर फ्यूल सेक्शन, और इट मे बी इन द R&D सेक्शन, और इट मे बी इन द हेवी वाटर प्रोजेक्ट सेक्शन. कहीं भी हो सकती है अपॉइंटमेंट, बट इट्स a 1-year program. And during this 1 year, you'll be getting the stipend, and of course, you'll be getting all the advantages of the training. Then comes the second one, the DGFS. This is for doing your 2 years MTech or M Chemical if you already got an independent admission in a few institutes. कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको अभी मैं लिस्ट आउट करूंगा. उनमें अगर आपको इंडिपेंडेंटली एडमिशन मिल जाए, इफ यू गॉट एन इंडिपेंडेंट एडमिशन इन इट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू DAE will be paying the fee, will give you a stipend, and you have to work for DAE 3 years after that. Minimum 3 years through a bond. So MTech की फी आपको वो रिएम्बर्स करेंगे, स्टाइफंड भी देंगे, और आपको बस उनके यहाँ पे काम करना है. That's how they identify talent. That's how they identify the best of the best brains in the country. So या तो OCS से जा सकते हैं बीटेक के बाद सीधा, या आप MTech करके वहां से भी जा सकते हैं. And of course there will be again 4 months training after your MTech also. उसके बाद भी 4 months training तो जरूरी है. And of course this is one of the best things to happen for you, that you are being secured with a job before you join your MTech, and you're also getting an MTech with it. तो MTech भी हो जाएगा, आपकी जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी. This is a very good entry level. But only thing is your DGFS, Department of Atomic Energy Graduate Fellowship Scheme, should be done only in these institutes: IIT Bombay, IIT Delhi, Guwahati, Kanpur, Kharagpur, Madras, Roorkee, BHU Varanasi, और NIT Rourkela and Institute of Chemical Technology Mumbai. इसमें ही आपको MTech करना है, इसमें ही आपके एडमिशन हुआ तो, और आपकी इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ तो, you will be getting the DGFS scholarship. I hope you're getting the point, students. So DGFS, Department of Atomic Energy Graduate Fellowship Scheme, which is for 2 years
of which there will be 2 semesters of coursework, 2 semesters of project. सो कुल मिला के 4 सेमेस्टर में एमटेक भी हो जाएगा, वापसी में आपकी जॉब भी रेडी है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ व्हाट इज द फी एंड व्हाट इज द स्टाइपेंड एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? यू कैन एक्सपेक्ट अ स्टाइपेंड ऑफ 55,000 पर मंथ विद अदर लॉट ऑफ एडवांटेजेस. दोनों को, ओसीएस को भी और डीजीएफएस को भी 55,000 per month stipend during that period of training or whatever it is. So 1 year for OCS और इनको लगभग 2 years 4 months they'll be getting that 55,000 stipend. And then of course be a bond. You have to sign a bond because you have to work for them for minimum period. 6.5 lakh का bond है OCS के लिए, 13 lakhs का bond है DGFS के लिए. That's obvious because they're investing so much on you. The commitment is always available. Then after the students, you will be absorbed as scientific officer. From the trainee scientific officer position, you will be absorbed as a scientific officer, and of course it's scientific officer C, that's where you start from, and you have a bright future there on reaching to different levels. This bright future of course will be in different organizations. कहीं भी आपकी posting हो सकती है. So hurry up students and hurry up for this notification. And last dates of course you can see here. 12th July is where you can start applying, and last dates for 7th and 9th August. Exam भी हैं 5th to 12th September में. तो we'll also, Unacademy Flux Channel will help you with various schemes for that exam, various interview tips. क्योंकि यहाँ पे interview is more critical. The exam is more of qualifying nature. The interview lasts from anywhere from 45 minutes to 1.5 hour. तो वो इंटरव्यू ही फाइनल है. दैट्स गोइंग टू हैव मोर इम्पैक्ट. सो होपफुली विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो. विल हेल्प यू विद डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट क्लासेस एंड डिफरेंट ओरिएंटेशन थिंग्स फॉर योर एग्जाम. सो गेट एंड नॉन गेट स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गेट रेडी, अप्लाई, एंड होपफुली यू सर्व योर कंट्री इन दिस मैनर. देश को सर्विस करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है. इट्स नॉट एन ईजी थिंग. Even if you go into a government organization, it's not necessary that you're serving it. You're not serving the country sometimes. Because you may be in an organization not heavily related to, the field work. So whatever it is, it's a very good opportunity to serve the country in the best of the best possible way. Don't look at it as one other, regular job. Look at it as a service to take the country to the next level. So hopefully students, all the best. Apply for it. Unacademy Flux, Unacademy Flux Channel, always with you. लाइक सब्सक्राइब स्टूडेंट्स, थोड़ी सी लाइक और सब्सक्राइब से एंकरेज कीजिए हमें. एंड ऑफ कोर्स दैट इज द ओनली थिंग वी एक्सपेक्ट. विल गिव यू लॉट ऑफ कंटेंट नाउ इन BRC ऑल्सो. विल गिव यू लॉट ऑफ हेल्प थ्रू आवर चैनल. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. Unacademy, let's crack it. Suresh VSR, always there with you students. Bye, take care.